Hello everyone, and this is Vipul Purohit and I welcome you to my YouTube channel. Now, in this particular video, I'm going to discuss about the general characteristics of ionic compounds. What is it? General characteristics of ionic compounds. Now, the first point which I want to clarify over here, and that is related to the first word, general. Okay, दोस्तों आपको समझ में आ रहा है जनरल का मतलब क्या है? Okay, स्पेसिफिक नहीं है, यानी एक्सेप्शन केसेस होंगे. हम सिर्फ यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. और किसके? आयनिक कंपाउंड्स के. ओके, तो जनरली अंडर दिस कैटेगरी हम 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपके सामने पेश करता हूं और वो है नेचर. The very first property is what? Nature. What is the nature of ionic compounds? And that is, they are hard, crystalline, solid. And the ions are closely spaced in the given lattice. Now, what is the meaning of this? Now, point number 1 is the ionic bonding is nothing but strong electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions, and hence that force of attraction is going to be strong. The strength of the bond is related to the physical state. Alright? And therefore I say what? Solids. Okay, because the force of attraction is going to be what? Strong enough. Now the next point is, the hardness and the softness of the particular material depends upon the arrangement of the particles in the given space. And that space is called as what? A space lattice. Or we call it as a crystal lattice. It's 3-dimensional. तो जिस तरीके से पार्टिकल्स को इस पर्टिकुलर स्पेस लैटिस में अरेंज किया गया है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या वो सब्सटेंस सख्त है या मुलायम है. क्योंकि सॉलिड्स तो है, लेकिन वी हैव सॉफ्ट सॉलिड्स आल्सो, वी हैव हार्ड सॉलिड्स आल्सो. तो हाउ टू आइडेंटिफाई? यस, बाय द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. और जब मैं पार्टिकल्स की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. But because we are discussing about ionic compounds, so you understand the particles has to be what? Oh yes, it's ions. तो देखो क्या लिखा मैंने. The ions are closely spaced. They are closely packed. और अगर वो closely packed है तो उनके बीच में interaction काफी मजबूत होगा. और अगर interaction मजबूत है तो हम उसको क्या बोलेंगे? It's going to be hard. क्योंकि every lattice has got 2 positions, or we say that 2 types of arrangements or 2 types of spaces. और वो 2 types of spaces कौन सा है? एक है void space और दूसरा है occupied space. कोई भी lattice पूरा का पूरा 100% भरा हुआ नहीं है. You check it out any lattice. Okay, it is never ever 100% filled. So there will be occupied as well as void space. So in an occupied space, we are going to discuss about the forces of attraction. Okay, if the forces of attraction in the occupied space, if the extent of the occupied space is more, that means that particular solid is hard. Okay, if the occupied space is less, if the particles are away from each other, then that particular solid is soft. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है कि closely spaced है, and therefore we say it is going to be what? Hard. Next thing is, if you remember in my previous video about chemical bonding, I given you a section of an ionic lattice. Okay, lattice means, as you know, it's a space in which the ions are arranged. और उसमें अगर आप गौर करोगे, ओके, तो मैंने ऐसे बताया था कि वहां पर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है. मतलब एवरी पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय अ नेगेटिव आयन और एवरी नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय अ पॉजिटिव आयन. यानी दोस्तों रेगुलरिटी है. ओके, हम लोग ने किसी भी तरीके से आयंस को नहीं अरेंज किया कि कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव साथ में, कभी कभी नेगेटिव नेगेटिव साथ में, कभी कभी पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में. ऐसा नहीं है. एक रेगुलरिटी फॉलो किया गया है कि जहां पर एवरी पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय अ नेगेटिव आयन व्हिच रिजल्ट्स इन अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड देयरफॉर द पार्टिकल्स आर व्हाट? क्लोजली स्पेस्ड.
और दोस्तों जब रेगुलरिटी की बात आती है तो तुरंत ही एक शब्द पॉपअप होना चाहिए आपके दिमाग में से, और वो क्या है? क्रिस्टलाइन. Okay, whenever there is regularity, there has to be what? Crystallinity. Okay, irregularity है तो it is amorphous. ये बात आपको याद रखना, because crystalline and amorphous is solely dependent on the arrangement of the particles in this given space. In practicals we do say that okay, crystalline means what? It is water soluble. Okay, amorphous है तो water insoluble, but that is only in practical terms. जब आप laboratory में practicals करते हो तब, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल theoretical बात कर रहे हैं, तो theoretical में ये बात याद रखिएगा. Whenever the arrangement of the particles is regular, okay, एक particular pattern follow करेगा, so it's regularity, and I call it as what? Crystalline. And hence we say it is hard because the ions are very closely spaced. They are crystalline because every ion is in contact with the oppositely charged ion, and therefore it is a crystalline. The force of attraction is strong, and therefore it is what? Solids. So ये था पहला characteristic of ionic compounds, and I'm very sure you have understood this, right? Oh yes. We go into the next point. मैंने आपको जैसे बोला, मैं आपको सिर्फ 4 मेन प्रॉपर्टीज बताऊंगा. ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बट आई एम गोइंग टू इंक्लूड ओनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 प्रॉपर्टीज. सो वी नाउ गोइंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 2, एंड दैट इज ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दोस्तों पहले मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में क्या अंतर है वो बताना चाहता हूं. Okay, in simple words, okay, I'm not going into the technical definitions and all, please. Nobody is going to ask you at this particular level that define melting point and boiling point. All right, but then we need to understand, okay, what exactly is the difference between the two. So simple words में हम बोलेंगे ये एक transition है in the physical state. Transition का मतलब क्या होता है? Change. Okay, बदलाव. Okay, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Transition. Okay, we call it as transition. किस में बदला होगा? Physical state में. You know the physical states are solid, liquid and gas. So when you talk about the melting point character, we say it's a conversion from solid to liquid. And when a liquid is getting converted into gas, we say it is boiling point. You understand this? Okay, so there is a change of physical state. Okay, so यही मैंने आपको बताया है कि melting point and boiling point, in simple words, what we say is it's a transition with respect to physical state or physical changes. Solid to liquid, liquid to gas. Now, what is the most important parameter which is going to be so crucial to determine the physical states? और वो क्या है? Arrangement of particles. The interaction between the particles. Okay, that is the crucial factor which determines the physical state. जब हम solid की बात करते हैं, the interactions are going to be what? Very high because they are closely spaced. अभी मैंने बताया. Okay, the forces of interaction amongst the particles in the given lattice is going to be high, so it is solid. If the interactions becomes weaker, it becomes liquid. Okay, or it becomes still weaker, weakest, it's going to be gas. Okay, interactions depends upon what distances. Okay, फासले के आधार पे प्यार होता है, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से. आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हो कि फासले बढ़ गए तो प्यार में कभी भी आ जाती है, और वही कुछ इधर हो रहा है. Okay, the separation of the particles is going to lower the interactions, and thereby it is going to bring about the change in the physical state. So in solid, the particles are very close to each other. So what I do is I supply energy to this. Okay, energy is supplied to that solid, so that the particles start to go away from each other. Okay, and so that it gets converted into what? Liquid. And that energy, my dear friends, is called as what? Melting point. Okay, so energy required to break down, nahi, ऐसा नहीं बोलेंगे, to lessen down the interaction, okay, between the particles. I won't use the word bond over here to be very precise, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि it is interaction between the particles becomes less, the particle separation increases, and thereby the solid gets converted into a liquid. अब क्या करेंगे? अब liquid में और energy supply करेंगे हम लोग, because we are going to convert the liquid into gas. So we supply still more energy to the liquid, and therefore it gets converted into gas, so that means the separation of particles still increases. यानी in a way, याद रखिएगा please, don't
try to catch the exact words. Okay, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे शब्दों के अर्थ का अनर्थ मत निकालिएगा. In a way हम ऐसे बोल सकते हैं इसे between melting point and boiling point, और वो ये है कि अगर एक बॉन्ड होता तो एक कंसिडरेशन ये करेंगे कि बॉन्ड को कमजोर करने का है बाय सप्लाइंग एनर्जी, एंड दूसरा कंसिडरेशन इस बॉन्ड को पूरा तोड़ देने का है. दोनों केसेस में एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड. लेकिन जहां पर बॉन्ड को कमजोर करना है वहां पर हमें कम एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर बॉन्ड को पूरा का पूरा तोड़ देने का है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो समथिंग लाइक दैट वी कैन रिलेट. ओके, वी कैन व्हाट रिलेट, ऐसे बोल सकते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड, जब मैं बोलता हूं कि वी आर ब्रिंगिंग डाउन द इंटरैक्शन, सो इट इज लाइक वी आर जस्ट लूजनिंग द बॉन्ड्स. और फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड में द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इज लेस एज कंपेयर्ड टू लिक्विड टू गैस. ओके, तो यहां पर इट कैन बी लुक्ड अपॉन एज द वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड, यहां पर इट कैन बी लुक्ड अपॉन एज ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड. इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट. याद रखिएगा, वापस से मैं दोहरा रहा हूं ये शब्दों को. एक्चुअली यहां पर कोई ऐसा बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बॉन्ड मतलब वो केमिकल बॉन्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं. ओके, तो हम लोग उस नजरिए से नहीं बात कर रहे. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरैक्शन अमॉन्ग्स्ट द पार्टिकल्स. उस नजरिए से मैं आपको बोल रहा हूं कि दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द वीकनिंग ऑफ द इंटरैक्शन, and this is about breaking. And for breaking we always require larger energy as compared to that of what? Weakening, and therefore we conclude that melting point is less than the boiling point. Yani, in other words, for the same substance, याद रखिएगा दोस्तों, I am not changing the substance, substance is the same. So for the same substance, the boiling point is greater than that of the melting point. Because जब मैं एक X amount का energy देता हूँ solid को, it gets converted into liquid. Now I need to continue heating. यानी energy और देना है, तब जाकर okay, वो गैस में परिवर्तित होगा. So obviously the boiling point is going to be more as compared to that of melting point. Got it? So this is what the difference is between melting point and boiling point. Now we come back to ionic compounds. Energy to be supplied. यहाँ पे मैंने बोला है weakening, breaking of interactions between the particles. मैंने आपको already बता दिया यहाँ पर the interaction between the particles is very high. यहाँ पे कौन सा particles है? Ions है. Also you remember it's oppositely charged ions, so it's obvious the interaction is going to be strong. So obviously the energy which has to be supplied will be high. क्योंकि जितना एनर्जी देना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंटरैक्शंस ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर. ओके, अगर एक मुझे बॉन्ड को कमजोर करना है तो मुझे पहले ये देखना होगा कि बॉन्ड कितना मजबूत है. अगर वो बॉन्ड काफी मजबूत है तो मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. इफ द बॉन्ड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो थोड़ा सा एनर्जी देगा वो टूट जाएगा. सो वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस. You getting it? So यहाँ पर आपको बताना है, in case of ionic bond, since the ionic bonding involves a stronger force of attraction amongst the oppositely charged ions, and therefore what we need to say is the energy required for that solid to get converted into liquid, or for that liquid to get converted into a gas, the energy required will be high, and therefore I say the melting point and the boiling point is going to be what? High for ionic compounds. Okay, ये हो गया दोस्तों property number 2. The first is nature and the second one is melting point and boiling point. I hope you have understood both these characteristics very well. We continue from where we stopped, and that is we now proceed to the property number 3, and that is all about conductivity. First of all, in simple terms, okay, I'm not going anywhere for the scientific definition, it's not required. Okay, we need to only understand the terms, what those terms are, and accordingly we need to apply to ionic compounds. Understood? Because that is what the purpose of our study is. So in simple words, conductivity का मतलब क्या होता है? It's allow the flow. In simple terms, ये है, it allows the flow. किसका? Obviously of heat or electricity. Okay, that is what we talk about conductivity.
ठीक है, allowing the flow of heat, electricity, we say that it is conductivity, and the substance which shows this phenomena are called as what? Conductors. ठीक है. Now हमें ये देखना है कि कंडक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है. Who is responsible for conductivity? तो देखो यहाँ पर वर्ड देखो, it is allowing the flow. Flow समझ में आ रहा है? Its flow is related to what? Mobility. एक जगह से दूसरी जगह, तुरंत ऐसा याद रखने का. फ्लो मतलब इट इज मोबिलिटी. ओके, इट्स नॉट अबाउट रिजिडिटी. एक ही जगह पर रह के ये फिनोमेना नहीं देखा जा सकता. So when you talk about something that who is responsible for conductivity, that means that particular species also should be what? Yes, mobile. ओके, और मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह. अब सिंपल है दोस्तों, याद रखेगा. अगर आपको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ओके, जब एक इंसान बहुत बीमार होता है, ओके, तो डॉक्टर को क्या बोलता है? उसको बेड रेस्ट कर, बिकॉज उसके अंदर एनर्जी लेवल इज वेरी लो. तो एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा पाएगा. You understand this? So for moving from one point to another, what is required is energy. और एनर्जी का दूसरा मतलब क्या होता है? चार्ज. ओके, और जिस स्पीशीज के ऊपर चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस. Got it? So this is what it is. Ions or charged species are responsible for conductivity. Okay? तो ये आपको याद रखने का है. We talk about ions or we talk about what? Charged species. मतलब electrons also can be considered as charged species, and we say it is responsible for conductivity. Okay? यहाँ तक I guess everything is clear. Next thing is, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि which species are going to be conductive. तो अभी क्या हो जाता है? Next point is what? The students feel that if there is a presence of such species, then that particular substance is a good conductor. Okay, यानी यहाँ पर मैंने लिखा है charged species. Okay, charged species में इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, तो मतलब क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स है तो हाँ वो कंडक्टर है. तो दोस्तों अगर ऐसा है तो out of all the elements in the periodic table, exactly established elements are 118. Okay, of course, there are many other elements also, but then I'm talking about what? Exactly established, whose properties are very well understood so far. So they are considered to be 180, or whatever X number of elements are. If a presence of electrons is responsible for conductivity, if, ये word सुनो please, if the presence of electron, which is a charged species, is responsible for conductivity, तो my dear friends, each and every element present in the periodic table must be good conductors. बराबर ना? क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा नहीं है दोस्तों पीरियोडिक टेबल में जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है. तो ऐसे ही हो जाता था ना. यानी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज स्पीशीज से कोई सब्सटेंस कंडक्टर नहीं बनता. ऑलराइट, ये तो एक इनिशियल रिक्वायरमेंट है कि देयर हैज टू बी आयंस और देयर हैज टू बी व्हाट? चार्ज स्पीशीज. अब दूसरा रिक्वायरमेंट बाकी है दोस्तों. वो दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हुआ, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी. आई बात समझ में? और वो दूसरी क्या है? क्योंकि वो फ्लो होना चाहिए, इसलिए दीज आयंस और चार्ज स्पीशीज हैज टू बी व्हाट? In the free state. समझ में आई बात आप लोग को? इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूं ये. Okay, so presence of ions or charged species is not going to be the sole criteria for conductivity. It has to be the presence of what? The ions, which has to be in the free state. The electrons has to be what? In the free state. Then only a particular substance is going to behave as what? A conductor. Okay, now it has to be like given as, what is to be happening over here is that, yes, ionic compounds के बारे में when we talk about what? Ionic compounds. You know very well, they are made up of what? Oppositely charged ions. Okay, it's made up of oppositely charged ions. तो अगर मैं आपको simple example दे देता हूँ NaCl. There is a bond between Na and Cl. Alright, so now question arises. But तो क्या बोलते हैं? Ionic compound है ना? Yes, they are conductors. Why? Because they are made up of ions. But my dear friends, this bond is there, which is holding the two oppositely charged ions very firmly. यानी ions तो है लेकिन वो rigid है.
और अगर वो rigid है, they cannot move from one point to another, they will not be responsible for conductivity. So when I say NaCl in the solid state, when the bond is intact, we say it is a very poor conductor. Actually मैं insulator नहीं बोलना चाहता हूँ, to be on the safer side, क्योंकि थोड़े बहुत vibrations possible हो सकते हैं. Okay, there might be some vibrations. Okay, so that can result in a conductivity. It can result in conductivity. दोस्तों please मेरे wordings पे ध्यान दीजिएगा. इसलिए I am using what? Poor conductor, to be on the safer side. Okay, insulator मतलब क्या? No conductivity at all, zero conductivity. Okay, अंतर है दोस्तों zero conductivity में और poor conductivity में. Okay, इसलिए ये vibrations के वजह से मैंने ये word use किया है. Okay, so वो ना के बराबर है, ना नहीं है लेकिन ना के बराबर है. So as long as the ionic compound is in the solid state, the bond is intact, then it will behave as what? A poor conductor. लेकिन जब मैं इसको energy दूंगा, when I give energy, what is going to happen? It's going to break down and it's going to give me what? Na plus and Cl minus. देखा यहाँ पे and लिखा है, मतलब ये दोनों अलग हो गए. So these are free ions. Free ions is obviously, you know very well, the conductivity will increase. Okay, तो ये कौन सा state हो गया अभी? Molten state. Okay, we call it as what? Molten state. When a solid being heated, it gets converted into a liquid. It is called as what? A molten state. So in the molten state, the conductivity increases. But in the solid state, the conductivity is less. The other choice is, one more choice, and that is, okay, and that is when an ionic solute is dissolved in a solvent. I'll be discussing about this property, the fourth property, in detail. लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा, okay, कि ionic compound को जब मैं dissolve करूँगा in a particular solvent, तो एक बात जरूर है, याद रखिएगा आप लोग कि if any solute wants to get dissolved in the solvent, the bond breaks. The bond what? Breaks. And when the bond breaks, ionic bond breaks, क्या मिलेगा? Ions. Free ions. And they will be responsible for what? Conductivity. Okay, इसलिए दोस्तों क्या होता है कि next possibility is, and that is solution state. In the solution state, solution का मतलब समझता है ना, when a solute gets dissolved in the solvent. So when NaCl gets dissolved in the solvent, we get a solution. Okay, and that solution state will contain free ions, and those free ions will be also responsible for what? Conductivity. So ये देखो, ये यहाँ पर मैं एक और एरो लेके जा रहा हूँ. So molten state में conductivity increases, the solution state में conductivity increases. Okay, कई बार ऐसा होता है ना कि low pressure हो गया, okay, इंसान को चक्कर आ रहा है, तो क्या करते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, सबसे बेस्ट इज व्हाट? ओके, नमक डालो थोड़ा पानी में और उसको ये करो, स्टर करो और उसको पिला दो. नमक की कमी हो जाने की वजह से ऐसे होता है. ऑलराइट, तो क्या होता है, जब पानी में डालेंगे उसको डिसॉल्व हो जाएगा, फ्री आयंस मिलेगा, और वो जब अंदर जाएगा, सो दे आर, बिकॉज दे आर फ्री आयंस, दे विल अलाउ द फ्लो. Okay, and as a result of it, थोड़ा energy मिलेगा. Okay, the flow increases. Okay, within the body. Okay, and therefore, in patients for low blood pressure, okay, the best way is what? To give, of course, sugar के साथ salt भी देना जरूरी है. Simple is electron. You must be knowing electron. Okay, it contains sugar and as well as it contains what? NaCl and KCl. और उसको पानी में डालना पड़ता है. ओके, उसको ऐसा पैकेट खोल के उसमें डाला और सीधा मुंह में डाल दिया, ऐसा नहीं है. इट हैज टू बी एडेड इनटू वाटर सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन स्टेट, सो दैट आई गेट फ्री आयंस एंड देयरफॉर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. अंडरस्टूड दिस? सो ये था दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 3, एंड दैट इज कंडक्टिविटी. After conductivity, my dear friends, we consider the last property, and that is, under this particular section, the last property is solubility. मैंने आपको पहले भी बोला, there are many properties, characteristics, but we are just restricting ourselves to 4 important ones, and that is solubility. दोस्तों, when you talk about solubility, कुछ words आते हैं हमारे दिमाग में, and वो क्या है? पहला है solute, the substance which gets dissolved. Okay, फिर आता है क्या? Solution, solvent, which dissolves others. Others मतलब कौन? Solute.
और दोनों का मिलन होता है तो what we get is a solution. Okay, so these are some basic terms, okay, which we need to come to understanding when we talk about what? Solubility. ठीक है, next point is generally, वापस से बोल देता हूँ, specifying this word generally because there are exceptional cases. So generally the principle is on the basis of what you have understood. हम क्या बोलते हैं? Solvent dissolves solute. ठीक है ना? Solvent dissolves solute. Now what I do is I replace these two words by like. Okay, and यहाँ पे तो मैं वही रखूँगा, that is dissolves. So I'm replacing the word solvent and solute by what? Like. Now here like means what? आपका वो Facebook वाला like नहीं, please. Like means similarity. तो इसका मतलब क्या हुआ? If the solvent and the solute both are similar, then what is happening? Dissolves. और dissolve हुआ तो क्या मिलेगा? Solution. ठीक है? But then once again I repeat, this principle like dissolves like is general. Exceptional cases are there. ठीक है? But anyways, we are here to discuss only the general properties. अभी next question is, which will be coming into your mind is, when you talk about like, okay, ठीक है, वो Facebook वाला नहीं है, वो similarity वाला है. So now what is the meaning of similarity? What is he talking about? Which type of similarity is he talking about? So, now what is the similarity? The answer is over here. When I talk about a compound, okay, yeah, molecule, जिसमें bond होता है, okay, बिना bond का तो हो ही नहीं सकता molecule, okay, तो जब मैं energy देता हूँ, when I give energy, so what happens is there are two possibilities. Either it gives you ions or it gives you atoms. I hope you understand the difference. Atoms are neutral, ions are charged. Okay, दो possibility है. Possibility number one is when I supply energy, alright, the bond breaks and it either gives you atoms or it gives you all ions. If it gives ions, charged species, then I say it is polar. And if it gives atoms, then we call it as what? Non-polar. What we say? It is non-polar. यानी polarity का मतलब क्या होता है? Charges. You must have seen in the battery also. Okay, a pencil say positive, negative. Alright, so that means what? There are two polarities. Alright, so there are two charges. So यहाँ पर भी वही है कि when we have charges, ion formation, तो हम बोलेंगे वो compound is polar. अगर वो atoms बनाता है तो it is non-polar. तो मैं जो similarity की बात कर रहा हूँ, I'm talking about with respect to that, my dear friends. Okay, the similarity is with respect to what? Polarities. So now I hope you are getting it. So it means the polar solute will dissolve in polar solvent. Non-polar solute will dissolve in non-polar solvent. General, वापस बोल रहा हूँ ये general. Exceptional cases are there, but this is general. अभी देखिए दोस्तों, we are talking about ionic compounds, and we talk about ionic compounds, so it has to be polar. So what we say is that ionic compounds dissolve in polar solvent. And the very best example, the very first example which should come in our mind when we say polar, yes, and that is water. Okay, water is one of the best polar solvent, and therefore we say ionic compounds are going to dissolve in water. Okay, उसका polarity is high, its dielectric constant D जिसे बोलते हैं, its value is 80. Okay, and therefore because of this high polarity, generally ionic compounds are soluble in water. And the best example, you know it very well, नमक, NaCl. Okay, आप पानी में डालो, थोड़ा सा stir करो, देखो वो dissolve हो जाता है. Alright, so this is what we talk about generally. ठीक है, one more point I want to add, and that is, though I have two compounds, both of them are ionic, लेकिन solubility in water may differ. Okay, one best example I'll give you is NaCl and magnesium oxide. NaCl and magnesium oxide, both of them
are going to be what? Ionic compounds. Okay, so they are polar. So they will dissolve in water, which is going to be polar. लेकिन extent of solubility is different. क्यों मालूम है? मैंने आपको पढ़ाया था ये. Okay, that is about lattice energy. Yes, do you remember in my previous videos? Please go through it. Okay, if you have forgotten it. Okay, lattice energy says that if the charges are more, then the lattice energy is high. And if the lattice energy is high, the ionic bonding is strong. Okay, the magnesium oxide में the charges are 2 plus 2 minus. NaCl में the charge is 1. तो चार्ज ज़्यादा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम ऑक्साइड का ज़्यादा है, तो आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर. एंड इफ द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉल्युबिलिटी बिकम्स लेस. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, किसी भी सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है तो उसका बॉन्ड का टूटना जरूरी है. Alright, so as a result of which, because the bond is stronger of MgO as compared to NaCl, मैं comparison की बात कर रहा हूँ. Okay, I'm talking about with respect to comparison. So because of that, magnesium oxide का solubility is to a lesser extent as compared to that of NaCl. Okay, this is one point which I want you to understand. Okay, both of them will dissolve in water, लेकिन extent of solubility differs. Okay, जहाँ पर भी lattice energy कम है, वहाँ पर solubility in water will be high. Okay, that way you can understand. So this is, my dear friends, about solubility, and in this way, I hope you understood that we are talking about 4 characteristics. Number 1 was nature, number 2 melting point, boiling point, number 3 conductivity, and number 4, yes, in front of you, that is solubility. And I hope you have understood all these 4 characteristics absolutely well.